Welcome back. Communal tensions flared up in Uttarakhand Haldwani after the district administration demolished illegal madrasa and mosque constructed on the government land in the Banbhulupura area. 2 people have died in the violence, whereas over 100 people, including many police personnel, have sustained injuries. A high alert has been issued in Haldwani and shoot-at-sight orders have been given against the rioters. According to the police, the rioters pelted stone at the municipal corporation office and set the vehicles on fire outside the police station. 4 people have been detained so far, while a dozen others attackers have been identified. What led to the escalation of communal tension in Haldwani? Is it not wrong for the rioters to take matters into their own hands and attack police personnel instead of taking legal recourse? Is there an element of mischief behind this communal flare-up in Haldwani? To discuss more on this, I'll be joined by Vikram Singh, former DGP Uttar Pradesh, my correspondent colleague who's there in Haldwani tracking all the developments which is there, and also Sanjay Rana, who's a political analyst. But before I go to them, I'll first listen into all the sound bites that have come from there, the walkthrough which has been finalized, which shows the horror which unfolded in Haldwani in the last 24 hours, and then we will start this discussion. यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहां से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहां से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। अभी तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्राउंड पोजीशन। वंस वी गो बैक टू देहरादून, देन वी विल कम आउट विद द ऑर्डर्स व्हिच विल बी इशूड टुडे। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को ढाने गई थी और वहां पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में आगजनी की गई और फायरिंग की गई। इस पूरे मामले में लगभग 139 लोग जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन वो नगर निगम कर्मचारी जो कि ढहाने गए थे, जेसीबी लेकर के, जेसीबी को भी आग के हवाले किया गया, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। कई नगर निगम के कर्मचारी जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कैसा था वो खौफनाक मंजर, बताने के लिए हमारे साथ चश्मदीद इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव, क्या हुआ था उस वक्त, आप वहाँ पर थे? क्या निकाल करके मार रहे थे हमें। अच्छा। और फोन छीना है मेरे, तो पैसे भी छीने उनने। और क्या बताऊं मैं आपको, मैं याद करता हूं तो मेरे नींद नहीं आ रही ना, मेरे से बोला जाएगा। उसके बाद वो थोड़ी बहुत पत्थर आने लगे, फिर हमने गाड़ी आगे को करी तो फिर उसके बाद उन्हें ज़्यादा ही हद से ज़्यादा पत्थर आने लगे। फिर हमने गाड़ी बाहर को करी तो उन्हें गाड़ी के अंदर से पत्थर निकाल करके हमें खींच करके मारना चालू करा। फिर हम भागे, वैसे करके भागे, फिर भी हम पे पेट्रोल फेंके, उन्हें पेट्रोल के बम फेंके और पिस्टल चला रहे थे ऊपर से, कभी बाहर से कोई बच्चे फेंक रहे थे, कोई शीशे फेंक रहे थे, कोई हर एक चीज़ फेंक। याद कितने लोग रहे होंगे लगभग? वो तो हर घर में थे, वो तो हर घर से, जिस गली से हम निकले तो वो हर घर, हर छत के ऊपर पे थे, बच्चे थे, बुढ़े थे, सब निकल कर मार रहे थे हमें। सभी मार रहे थे? सब, एक भी ऐसा कोई नहीं था जो बच्चा तक का मार रहा था हमें। ये नगर निगम कर्मचारी हैं जिनको काफी ज्यादा चोट आई है। आप देख सकते हैं पूरा सिर इनका फाड़ रखा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार।
राजकुमार, हुआ क्या था? आप वहाँ पे जब पहुँचे तो क्या हुआ था, पूरा शुरू से बताइए। इतना तो हम लोग बहुत पीछे थे, काफ़ी लोग आ गए थे, हमारी सबसे लास्ट वाली गाड़ी थी। पूरा स्टाफ था हमारा नगर निगम का, कोई मस्जिद थी उसको तोड़ने के लिए, वहाँ पहले से वो लोग तैनात थे। ईंट पत्थर बहुत भयंकर तरीके से फेंक रहे थे वो लोग हम लोग को बचाओ। पुलिसकर्मी भी थे, उनके भी लगी हैं चोट, महिलाएं पुलिस थी उनको भी लगी है, और हम लोगों के साथ वाले भी जो स्टाफ में थे नगर निगम के, उनके भी काफ़ी चोटें लगी हैं। क्या हुआ था अरविंदर उस वक्त जब आप वहाँ पे गए? आप क्या करते हैं, आपका क्या काम था वहाँ पे उस वक्त? मैं जेसीबी चलाता हूँ सर। अच्छा, जेसीबी आप ही चला रहे थे? जो आग लगाई है जेसीबी में वो आप ही की थी? जी। अच्छा, क्या हुआ क्या था? सबसे आगे आप चले थे, हुआ क्या था उस वक्त? हम मेरे आगे 2 मशीनें थी जिन पे करंट छोड़ा गया। मतलब हमारे जाने से लेकर वापसी होने तक 2.5 घंटे रेगुलर पत्थर बरसे हैं। आप जेसीबी से थोड़ा सा आपने वो तोड़ दिया था तब तक? पत्थर बरसते हुए हमने तोड़ा था हमारी मशीनों को, जब तक शीशे फूट चुके थे। हमने हेलमेट लगा रखे थे, तब भी हमारी इतनी चोट आ गई है। मेरे पूरे शरीर में ईंटें बरसी हैं, पूरा शरीर मेरा दर्द कर रहा है। This was a walkthrough which was done by a reporter during the course of the day, trying to, talking to the people who got injured. More than 100 police personnel have been injured. First I'll go to my reporter who's there, Abhijit Thakur, who's there on the ground, and then I'll go to Vikram Singh and also to Sanjay Rana. Abhijit, आप वहाँ ground पे हैं, अभी क्या हालात है वहाँ के? अभिजीत, मेरी आवाज 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और कर्फ्यू अभी भी यहां पर लागू है। अगर हम बात करें बनभूलपुरा की, उसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। रेगुलर पुलिस की गश्त हो रही है, उसके अलावा डिप्लॉयमेंट है, और 1 से 1.5 किलोमीटर जो घटना स्थल है मुख्य, वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है बिना अनुमति के। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की गाड़ियां भी यहाँ पर लगातार आती रहती हैं और राउंड लगाती रहती हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि डिप्लॉयमेंट आपको इस तरह की जगह जगह पुलिसकर्मियों की मिल जाएगी, अर्धसैनिक बलों की मिल जाएगी। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहां से मुख्य जो घटनास्थल है, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, जहां पर डेमोलिशन वर्क करने के लिए यहां के नगर निगम के एम्प्लॉइज पहुंचे थे। उसके अलावा अगर बात करें तो लोकल पुलिस पहुंची थी। वो यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरे एरिया को एक तरीके से सील कर दिया गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और कहीं किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं हो सकती। कर्फ्यू को सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बनभूलपुरा के इसी क्षेत्र में जो है वो लगाया गया। उसके अलावा जो है पूरे हल्द्वानी में जो है मार्केट को बंद रखा गया है। तो इस तरह के हालात अभी भी हैं। बात करें अगर कार्रवाई की, तो पुलिस लगातार जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनकी तलाश कर रही है, उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। 4 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद आज यहां पहुंचे और जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की, उन्होंने उनका हालचाल जाना है। उसके अलावा जो भी वस्तु स्थिति अभी है बनभूलपुरा की, उसके बारे में उन्होंने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी आज यहां पर पहुंचे और उनसे उन्होंने जायजा लिया। तो बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेते हुए दिख रही है सरकार भी। लेकिन ये जो घटना हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि पूरी तरीके से पूर्व नियोजित ये घटना लगती है और अधिकारी और तमाम लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं, सरकार भी यही मानती है। जी ओके, थैंक यू अभिजीत, फॉर गिविंग अस अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देयर ऑन द ग्राउंड. मिस्टर विक्रम सिंह, you heard what Abhijit was telling us about how this entire violence was premeditated, they were prepared for this, and more than 100 police personnel they have suffered injury. How do you view this? I mean, don't you think that the police or the administrative could have reacted more forcefully or reacted in a much more calibrated fashion, sir? Brajesh ji, good evening. I have been senior superintendent of police in Nainital for 3.5 years. Things were not half as bad when Mrs. Indira Gandhi was assassinated in 1984 and I was the SSP. And therefore, I would say that the administration should have been more firm, more proactive, and should have come down like millions of tons of bricks on the rioters. Vandana Singh, the district magistrate, is on record to have said that the drone footages did not disclose the storage of brickbats 3 days earlier. How come that after 72 hours, all the rooftops were full of Molotov cocktails, brickbats, and also country-made weapons were used to attack the police party and the administration and the corporation staff? Now, this is just not acceptable. There should be consequences and deterrence of a type, as Mr. Dinesh Sharma said, that the 3 generations, successive generations, would not forget what happened to the perpetrators of this riotous situation. Only 10 arrests. I would have expected at least 200 arrests by now.
and invoking the provisions of the National Security Acts, as also the UAPA 307 of the IPC, 332 of the IPC, so that people would remember that this is just not lucrative or in any way fashionable or in any way beneficial for them or their families to attack the police or men in uniform. They represent the might of the state, the police stations, the uniform, and the men and women in the police force. Now to say this, to your question, the subsequent part of the question, that yes, if there had been anticipation and actionable intelligence, which I feel there was a lack of, then I think things would have been very different. But now, better late than never. At least now pursue all those who are absconding or who have gone underground, those who provoked the crowds, those who brought the crowds out of their homes, and indeed took measures to attack the police parties and also the corporation staff. They not only vandalized the vehicles, indulged in wanton arson activities, they also attacked and chased away the police personnel. Now, this is just not acceptable. I would advise them to use artificial intelligence, facial image recognition software, identify all the rioters and the hoodlums and those who have passed record, and bring them to book and give them a lesson of a lifetime. Well, absolutely, because the visual which we're playing, when Pushkar Singh Dhami, the Chief Minister, was meeting, the might of the state looked very badly bruised and beaten, which was an unfortunate, scene to witness. Mr. Rana, how do you view this violence which happened yesterday? The policemen were caught unawares, the massive stone pelting saw to it that, hundreds of people, police personnel and, the Nagar Nigam people who went to ensure that demolition could take place. How do you view this? I mean, isn't that a big failure on the part of the government to have not anticipated this at all? I would not say it's a failure of the government, because I look at a totally different way altogether. When you're talking about any kind of anti-encroachment activity, Muslim encroachment has not only happened in Muslim area, also it's happened in the Hindu area. So no one has faced any kind of agitation against encroachment or municipality people or against the police. Whenever they have entered in the Muslim community, they have reacted, and it was well expected after the UCC, the UCC act which Mr. Dhami presented in the Vidhan Sabha. It was well expected, because if you look at the incidences, it's not coincidence. It was well planned. Look at the stone, how they have collected stone. Look at the petrol bumps, how they have done it. Would have thought about it, Mr. Rana. Shouldn't the government have thought about it? If I go by exactly what you're saying, wasn't the government caught napping? Shouldn't they have been much more well prepared after introduction of UCC? Okay. Or is it a welcome sight seeing those police officers, badly bruised and beaten? Yeah, any form of the body, they will have some kind of intelligence. I'm not denying. There was about 4,000 policemen. It's a huge amount. It's not a small amount, but it was not expected this kind of reaction is going to happen, number one. And why you are reacting when you are doing this kind of activity? It was on the basis of the order which High Court has passed, number one. The government was trying to implement the order given by the court, number two. Number three, when you believe in the court and the law of the land, then you have to follow. Number four, obviously I heard that there was a mosque, there was a madrasa. Do hadith or any Muslim, as per the Muslim law, you can make or build any mosque or any madrasa on disputed land? No. So that is the conspiracy which has been built, and it's nothing new. Obviously, if you look at from 1975, it's been there. It's been there in the system, and Congress has been doing this activity. Look at Indra Hridesh and his son Sumit. They look at the statement of ex-chief minister of Uttarakhand. So you need to look at all the parameters before reaching to the conclusion. But you cannot behave the way the Muslim community has behaved towards the authorities. Number five, you can do the politics. Politics is absolutely, you can do it. Your opposition party is there on the power. You can do the politics. But please understand, if any illegal activity which is going on and supporting by any ways is supporting a terrorism. So this kind of activity should not be acceptable. And near about 100 plus policemen who were injured as per the report which you are showing to us. But how it's happened, the police or government authority has to take a call, and they have to have different, I would suggest that government should make a different law, because this kind of activity, stone planting, is keep on going and increasing everywhere across India. So there should be a different law to take care of this kind of people. But why is happening?
because it's happened, everyone. Okay, Mr. Rana, I'll come back to you. Mr. Rana, I'll come back to you. Let's first, listen into the district magistrate of Nainital and what she has to say, and then we will, we'll carry on with the conversation. हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। फैल रही थी, बहुत सारे इस तरीके के रूमर फैल रहे थे जिससे कम्युनिटी में जो है कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांस था। इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है। जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है, इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बता रहा है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो ये सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट में एज एसएसपी मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था, और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, वहां पे किसी तरीके का इस तरह घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिंता उसको बचाने के लिए स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया। थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोग डेथ किस वेपन से, किस के गोली चलाने से हुई। पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया क्या वजह, क्या मंशा की, क्या ऐसा गुस्सा था लोगों के भीतर जो पुलिस और प्रशासन इतना नाराज? देखिए, गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं, ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो इन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है। उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था और आगे भी इनको समझ किया जाएगा कि जो भी संविधान को स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेंगी। Well, this was the Senior Superintendent of Police, Nainital, and District Magistrate who were trying to tell the reporters concerned about how the entire situation panned out. Vikram Singh ji, how does the state ensure, because there was a UCC bill which was passed. We also saw, that there were tensions running high. Various groups had come out, done press conferences and all. There's a situation which is emerging in Uttar Pradesh, also in Bareilly. How does the state prepares itself for this kind of eventuality? You talk of drone and all is all right, but they spectacularly missed the stones and all which were hidden there. Brajesh, this is nothing like you allow the grass to grow underneath your feet.
You can never be taken by surprise. There's a backup for a backup for a backup for a backup. And I, for one in 36, have never been taken by surprise because I know and cater to a worst case scenario and prepare for a 3x6 contingency plan. I have never been overwhelmed. And whenever they was trying to outflank me, well, there were consequences for those. Of course, you have to be extremely professional. Every district has an anti-riot drill and anti-riot scheme specifically and customized to that district. I do hope those rehearsals were carried out, and these rehearsals are supposed to be carried out on a monthly basis so that every employee in the police and the revenue knows where is his duty and what to expect in the case of such a riotous situation. The internal security scheme is customized only to that. I do hope that has been rehearsed. And if had it been these rehearsed, perhaps this would not have been the outcome. Should be something like it should be at the back of your palm and like a reflex action, so that even without batting an eyelid, you know where you have to go, where is the armory, where is the fire service department, where is the medical and health emergency. Everything is catered to in the internal security scheme. But yes, getting in the reinforcement in good time, and as Mr. Prahlad Narayan Meena, the SSP said, and Vandana Singh said, there is merit in what they say. But I would have been very happy if they had an upper hand from day one, and they should have anticipated, expected, and should have given a befitting response from day one itself, from the moment the first brickbat came, rather than allow. As the Israelis say, the moment you put your hand in your pocket to pick out the brickbat, well, there will be consequences and you'll be decimated in no time. That is the response one would expect in respect of rioters and those who do not believe in the rule of law. Well, you know, you have been SSP of Nainital, you have been Director General of Police Uttar Pradesh, and you know there have been lot of talk also on the social media and others about how this would have been seen a completely different response had it happened in Uttar Pradesh. What have been your response, sir? You said it. Things would have been very different. What to talk of happened now in Yogi Ji's time? If I had been the DGP, something like this would never have happened. A crowd would never have collected. The brickbats would never have been there. And before the demolition happened, there would have been 200 preventive arrests of all the known bad characters and history cheaters and rioters. And also, the area would have been converted into a cantonment, as they say, ilake ko chhawni mein tabdeel kar diya jata. That would have been a different story. But again, all is not lost. Take hold of the CCTV footages, identify and get to the jugulars of all the troublemakers, put them behind bars and attach all their movable and immovable property. Even that will have a salutary impact. Okay. Well, thank you very much, Mr. Vikram Singh, former DGP Uttar Pradesh, Sanjay Rana, political analyst, and Abhijit Thakur, my reporter from the ground from Haldwani, was bringing us to speed with what is happening there on the ground. That's all we have for today's bulletin. Thanks for watching News 9 Live. वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा. There's certainly a wall of capital coming into the clean tech, climate tech space, not just in India but across the world. This and more, streaming on world's first news OTT, News 9 Plus. Download now. A defiant performance by Ten Hag's men. Now standing at 7 feet 4 inches, Satnam Singh is making his way into professional wrestling. We are getting more good news for India. Currently, the industry is facing a lot of challenges as far as demand is concerned. Basically, the US markets has slowed down because of high inflation. So obviously,